Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 8 and this is our last part of our chapter number 2. It's sexual reproduction in flowering plants. So in previous lecture, we have completed our embryo. We have studied about seed portion. Okay. The wall of ovary develops into the wall of fruit called as pericarp. This is the definition of pericarp. So the wall of ovary, as we know what is ovary, okay, the structure of ovary as we know. So finally the ovary will become the fruit and the ovary wall is called as pericarp. Okay, so ovary wall is pericarp. The fruit may be fleshy as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as groundnut, mustard, etc. So these are the some examples and types of different types of fruit. Guava, orange, mango are fleshy. Fleshy meaning you can see here guava, mango, orange. These three fruits are fleshy in nature. Fleshy meaning as we can say रसीले फ्रूट. अब जो रसीले बोलते हैं वो उसको फ्लैसी बोलते हैं. सो जिसमें से जूस निकलता हो, मतलब जूस के लिए भी अच्छे हो. सो फ्लैसी मीनिंग जूसी वी कैन से. तो एज वी नो दिस आर द फ्लैसी एंड ड्राई एज ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड. सो दिस इज यू कैन सी हियर ग्राउंडनट. सो इट इज कॉल्ड एज ड्राई फ्रूट एंड सो मेनी ड्राई फ्रूट्स यू ऑल्सो नो. एंड हियर मस्टर्ड इज राई, जो हम बोलते हैं राई, वो राई है मस्टर्ड. Many fruits have evolved mechanism for the dispersal of seed. Dispersal meaning to spread. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in earlier class. Dispersal meaning the arrangement, we can say arrangement of seeds. So we have already studied in our earlier class classification of fruits and all this mechanism. Now is there any relationship between number of ovules and an ovary and the number of seeds present in a fruit? You have to think about this question and try to answer it. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary and other floral part will degenerate and fall off. तो फाइनली क्या होगा, जब भी मोस्ट प्लांट के अंदर क्या होगा, जब फ्रूट बनता है इट विल डेवलप फ्रॉम द ओवरी बट अदर फ्लोरल पार्ट्स. तो ओवरी तो फ्रूट में बन जाएगी, लेकिन जो दूसरे फ्लोरल पार्ट है, सेपल है, पेटल है, एट्सेट्रा, सो दे विल डीजनरेट एंड फॉल ऑफ, वो गिर जाएंगी. हावेवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू, एट्सेट्रा, सो द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन. थैलेमस इज अ पार्ट, ओके, इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट, बट थैलेमस विल कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन एंड दिस सच फ्रूट आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. Example is apple, strawberry and cashew. I will show you. Okay, here apple. So this is the thalamus of apple. Okay, you can see here seeds of apple and you can see here different endocarp, mesocarp layer. Okay, different layer of this apple. And in the strawberry, this is strawberry, apple, cashew are the false fruit. But why false fruit? Because their thalamus is combined into the fruit, main fruit part. So here strawberry also this is, you can see here thalamus. Okay, this all structure is thalamus, we are eating thalamus. And you can see here in cashew, ये हमारा जो cashew का नट है वो यहाँ पर है, बट द thalamus fleshy होता है काजू का, ठीक है, cashew का. So such fruits are called as false fruits. Most fruits however develop only from the ovary and are called as true fruits. True fruit हम किसको बोलेंगे कि जो डायरेक्ट ओवरी में से कम्प्लीटली फॉर्म हुए हैं उनको हम ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे. ओके, यहाँ पर थैलेमस जैसा कुछ नहीं होगा. सो ट्रू फ्रूट्स तो हमें मालूम ही है कौन से है. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are a few species in which fruit develop without fertilization. ओके, जैसा हमें मालूम है, एज वी नो द फर्टिलाइजेशन, फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसकी, फ्रूट है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो फ्रूट ही डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है फ्रूट का. बट इन सम स्पीसीज, इन फ्यू स्पीसीज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है
and then the fruit is developing. Okay, so such examples also are there, and such fruits are called as parthenocarpic fruits. Keep in mind, this is a definition of parthenocarpic fruits, meaning ऐसे फ्रूट्स की जो फर्टिलाइजेशन के बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन दे विल ग्रो, parthenocarpic, and the best example is banana. Okay, so banana is best example for this parthenocarpic fruit which is developed without fertilization. Now parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones, and such fruits are seedless. Okay, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो सीड भी नहीं बनेंगे, एंड दे इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स. हार्मोन इज जस्ट लाइक प्रोटीन. सो हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन का एक पर्टिकुलर रोल होता है हमारी बॉडी में, हर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स. सो हार्मोन जो होता है उसका रोल होता है ग्रोथ के अंदर. सो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स के अंदर वो इंड्यूस किए जाते हैं. डेट्स वाई द fruits are becoming seedless. Seeds offer the several advantage to the angiosperm. In the case of angiosperm, seeds जो होते हैं वो उसके काफ़ी सारे फायदे हैं, advantages. Firstly, the seeds reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water. वो water के बिना होंगे ही नहीं. Seed formation is more dependable. यहाँ पर जो seed formation है वो डिपेंडेबल है, मतलब वाटर के बिना यह सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा. बट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द इंडिपेंडेंट है, वो वाटर के बिना रह सकते हैं, बट हियर सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेबल. ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर द डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज. सो दिस आर द एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज. ओके, उसको एक हैबिट हो जाती है सीड्स को फॉर द डिस्पर्सल टू द न्यू हैबिटेट्स, मतलब कोई भी न्यू एरिया होगा, हैबिटेट मीनिंग द प्लेस, द एरिया वेयर दे लिव. सो एंड दे हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज. कॉलोनाइज मीनिंग वो ग्रुप में बढ़ते जाएंगे, स्प्रेड, दे विल स्प्रेड इन सच एरियाज. सो एज दे हैव अ सफिशियंट फूड रिजर्व्स, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. So उनके पास ऐसे sufficient food reserve होते हैं, meaning the food storage. Okay, food storage will be there, and young seedlings are the nourished. जो भी young seedling जो बनने वाले हैं, जो बन रहे हैं, they will be nourished until they are capable of the photosynthesis. जब तक उनका फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो कैपेबल नहीं होते, तब तक उसका नरिशमेंट होता रहेगा, and nutrition, they will take the nutrition. The hard seed coat provides the protection to the young embryo. This is the easy way. Okay, as we know hard seed coat होगा, जो coat meaning the outer layer. So what is the role of outer layer? So it will provide a protection. वो अंदर जो भी है उसको protect करेगा. But what is inside? So young embryo is inside. Being product of sexual reproduction, they generate the new genetic combinations leading to the variation. Guys, we are studying the advantages of the seed. So here seed का ये important example क्या है कि they generate the new genetic combination. Sexual reproduction का ये एक advantage हम बोल सकते हैं कि हमको final product जो होगी वो हमें combination वाली भी मिल सकती है, and they will vary. Variation भी हो सकता है genetically. Seed is the basis of our agriculture also. This is also one important example, and we can say one important advantage of this seed. Basis of our agriculture meaning our agriculture industry, जो भी हमारी agriculture industry है उसमें ये seed तो basic चीज़ है. Now dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for the storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. This is about dehydration and dormancy, meaning the last stage of seeds. So dehydration and dormancy, dehydration meaning the water loss. Seed में जो भी water है वो loss हो जाएगा, that is called as dehydration. Dormancy is also related to this phenomenon. Now these two of mature seeds are crucial for the storage of seed. Crucial होना मतलब इनकी वजह से ये हम क्या करते हैं, सीड का स्टोरेज करते हैं, विच कैन बी यूज एज द फूड थ्रू आउट द ईयर. हम ऐसे सीड का, ऐसे फूड का स्टोरेज करते हैं कि हमें वो पूरे साल हमको काम आए. ओके, बिकॉज हमको डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी से बचाना है. डेट्स वाई वी हैव टू प्रिवेंट दिस टू फिनोमिनन. हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स? यू हैव टू आंसर दिस.
नाउ दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ये जो पीरियड है, सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स होने के बाद सीड का क्या होता है, कितने दिनों तक वो लाइव रह सकते हैं। सो दिस पीरियड अगेन वेरीज द ग्रेटली डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज। इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड्स लॉस द वायबिलिटी विद इन अ फ्यू months and some seeds of a large number of species live for the several years also. So this is the difference. कुछ थोड़े महीनों में ही उनकी वायबिलिटी लॉस करेंगे एंड कुछ होंगे वो सालों तक कंप्लीट चलेंगे। सो सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, 100 सालों तक भी वो रह सकते हैं। एंड देर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स ऑल्सो, मतलब बहुत पुराने भी सीड्स का रिकॉर्ड भी है। द ओल्डेस्ट इज डेट इज़ द ल्यूपिनस एर्किटक्स is excavated from the Arctic tundra. This is the example of this oldest seed. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of the dormancy. Dormancy होने के बाद 10,000 years उसको बाद उसको germinate किया and flower भी किया उसको। A recent record of 2,000 years old viable seed is the date palm. Date palm का example है, उसके seed को viable रखा है for 2000 years. Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at the King Herod's place near the Dead Sea. So this is another example and MCQ can be asked. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to the comprehend and the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question. Meaning we have completed our chapter, we have seen all the fundamentals and different phenomenon. Now these are the some question we can ask. How many eggs are present in an embryo sac? How many embryo sacs are present in an ovule? And how many ovules are present in an ovary? And how many ovaries are present in a typical flower? So these are the some questions. And how many flowers are present on a tree, and so on. So these are the some example, and so many questions are there about this chapter and about this phenomenon and this all fundamentals. Okay, so can you think of the some plants in which fruits contain a very large number of seed? Orchid fruits are one such category, and each fruit contains the thousand of tiny seeds. You can see here orchid fruits, there are so many tiny seeds. You can see black seeds in present in one fruit. So ये seed कहाँ से आए? Ovule. Okay, ovule becomes the seed and ovary becomes the fruit finally. So ये fruit है जो ovary है and जो ovules are the seeds. So we can say एक ही ovary में कितने सारे ovules हैं? Orchid fruit are the one such category. Now similar is in the case of fruit of some parasitic species such as Orobanche and Striga. Have you seen the tiny seeds of ficus? Okay, ficus भी कुछ ऐसा ही दिखता है. You can see here in this diagram. So many seeds are there. So these are some examples. Now, how large is the tree of ficus developed from that tiny seeds? ये जो tiny seeds है, इसमें से पूरा ट्री बनता है, हमको मालूम है. So this is very amazing, we can say. The large tree of the ficus developed from these tiny seeds. And how many billion of seeds does each ficus tree produce? Okay, we can ask this question also. We can imagine कि एक फ्रूट में इतने सारे सीड्स है तो पूरे ट्री के अंदर कितने सीड्स होंगे? How many billion? Can you imagine an other example in which such a tiny structure can produce such large biomass over the years? You have to think this and try to answer. Now our last topic of this chapter is apomixis and polyembryony. Apomixis and polyembryony. Although seeds in general are the product of the fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce the seed without the fertilization and called as apomixis. Meaning this is the definition of apomixis. Apomixis meaning seeds without fertilization. Okay, यहाँ पर seeds तो है लेकिन without the fertilization they are developing. This is called as apomixis.
Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. तो हम apomixis को asexual reproduction ही बोल सकते हैं because no fertilization is there. fertilization कब होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का? किस केस में होगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब. बट एपोमिक्सिस में क्या है? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है. सो वी कैन से द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब इसके जैसा लगता है बट नॉट. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without the reductional division and develops into the embryo without fertilization. तो ऐसे केसेस में क्या होता है? In some species, diploid egg जो होगा, diploid meaning 2 chromosome number, okay, 2n chromosome number. Diploid egg cell is formed without the reductional division. Reductional division meaning meiosis. Meiosis नहीं हो रहा है बट एग सेल इज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर डिप्लॉयड एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर फाइनली वो डेवलप होता है एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन. एंड मोर ऑफन एज इन द मैनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज. सो सम केसेस में क्या होगा यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल इन साइट्रस वेराइटीज मीनिंग लेमन, ऑरेंज, दे आर कॉल्ड एज साइट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो वेराइटीज़. सो सम न्यूसेलर जो सेल्स है सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक ने, न्यूसेलर ने, ये सब हमने देख लिया है पिक्चर में, डायग्राम में. सो न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक. फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज. इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन द मैनी एम्ब्रियो. सो यहाँ पर एक ओव्यूल के अंदर काफ़ी सारे एम्ब्रियोज कैन बी देयर. So occurrence of more than one embryo in a seed referred to as polyembryony. This is our definition of polyembryony. Occurrence of more than one embryo in a seed. In a particular seed there are more than one embryo and that is called as polyembryony. Poly meaning more than one. So यहाँ पर more than one embryo है एक seed के अंदर. That's why polyembryony. Easy. Take out some seeds of the orange and squeeze them. Observe the many embryos of the different sizes and shape of each seeds. You have to do this experiment at your home. Take out some seeds of orange and squeeze them and observe the many embryos. उसके जो सीड है उसमें जो एम्ब्रियोस होंगे वो आपको देखने हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व. डिफरेंट साइज के सीड होंगे आपको मिलेंगे ऑरेंज के अंदर. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज आवर एम्ब्रियो. आप जब ऑरेंज का सीड अभी देखोगे तो उसमें एम्ब्रियो कहाँ पर होगा? This side. Okay, this is cotyledon. Okay, cotyledon meaning one monocot, dicot, as we know 2 types of cotyledon. So this is seed coat meaning outer layer and embryo is present over here. Count the number of embryo in such seed. What would be the genetic nature of apomictic embryos? You have to ask this question and try to answer this. What would be the genetic nature? Genetic nature meaning genetic is related to our DNA, genetic material, hereditary material. So genetic nature of apomictic embryos क्या हो सकता है? And can they be called as clone? Clone बोल सकते हैं क्या? Because we know the definition of clone also. Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Hybrid varieties, because hybrid meaning the combined structure, genetically combined. That is called as hybrid variety. So hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. आपने सुना ही होगा hybrid brinjal etc. BT cotton. Cultivation of hybrid has the tremendously increased the productivity. One of the problem of hybrid is that the hybrid seeds have to be produced every year. This is the disadvantage of this hybrid production. हमको hybrid अगर चाहिए hybrid product, बट दिस इज डिसएडवांटेज कि उनको हमें प्रोड्यूस, दे हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर. इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर्स. दैट्स वाई वी हैव टू दिस रिटेनिंग देयर हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर्स. सो द सीड, अगर सीड्स को हम कलेक्ट करके अगर हमको उसको शो करेंगे, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट होगा उनकी जो प्रोजेनी होगी and do not maintain the hybrid characters. Now production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seeds becomes too expensive for the
farmers. It is costly obviously and expensive for the farmers. If these hybrids are made into the Apomixis, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. So here this is our solution for this disadvantage. डिसएडवांटेज सीड की वजह से हो रहा है, बट हम उसमें से अगर सीड ही निकाल देंगे तो देर विल बी नो एनी डिसएडवांटेज. सो दिस इज द सॉल्यूशन. इफ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू द एपोमिक्टिस meaning no seed will be there and there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise the new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of the Apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in the many laboratories around the world to understand the genetics of Apomixis and to transfer the apomictic genes into the hybrid varieties. Obviously the more research is there about this hybridization and apomictic. So many research areas, so many research industries, so many research laboratories are there in India and in worldwide. They are keep working on this hybrid varieties, genetics. So बहुत कुछ है इसके अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड द फार्मर्स कैन कीप यूजिंग हाइब्रिड. जैसे ये जो चीज़ है एपोमिक्सिस का यूज़ करके फार्मर कैन ईजिली क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एवरी ईयर, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एपोमिक्सिस फिनोमिनन, एंड मोर एक्टिव रिसर्च आर गोइंग ऑन. सो दिस इज़ अबाउट आवर एपोमिक्सिस. So our chapter is finished here. Now we will study our new chapter. We will start our new chapter in next lecture. Thank you. Jai Swaminarayan.